हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारे जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड्स अर्थ साइंस। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हैं हमने पहले भी इसमें दो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने पहले पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, अब हम मज़ीद आगे बढ़ चुके हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं साइंटिफिक जो है हमारा मेथड्स इन अर्थ साइंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसमें डायनासोर क्यों बना हुआ है, क्या वजह है, क्या लिंक है इसका। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड्स इन अर्थ साइंस। इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग इन अ थिक फॉरेस्ट ऑन द ब्लैंक ऑफ अ रिवर। ठीक है, सडनली यू हैव अ बूमिंग नॉइस एंड यू फील द ग्राउंड बिगेन टू शेक। अभी कितने इसने डरावनी एक वो बना के इसको स्टार्ट किया कि आप इमेजिन करें कि आप स्टैंडिंग इन अ थिक फॉरेस्ट, एक घने जंगल में हैं, ऑन द ब्लैंक ऑफ अ रिवर। ठीक है, जिसमें आप समंदर के बीच में एक जंगल है और सडनली यू हेयर अ बूमिंग नॉइस। आपको एक बहुत खौफनाक आवाज़ आती है एंड यू फील द ग्राउंड बिगैन टू शेक, और आपका जो वो है ग्राउंड है वो शेक कर रहा है। You notice creatures head looming or over the treetops. ठीक है, the creature's head is so high that its neck must be 20 meter long. ठीक है, then the entire animals comes into view. You now understand why the ground is shaking. The giant animal is Simon-Sirius Halorum. ठीक है, और द अर्थ शेकर इलिस्ट्रेटर इन फिगर 1। देखें, ये कह रहा है ये चीज़ थी जो आपके अर्थ को हिला रही थी। लर्निंग अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द Simosauros halorum is not based on imagination alone. Scientists have been studying dinosaurs since the 18th century. Scientists gather bits and pieces of information about dinosaurs and their environments. Then they are recreate what dinosaur might have been like 150 million years ago. But how do scientists put it all together? Uh, how do they know if they have discovered a new species? Asking questions like this is the beginning of the process scientists use to learn more about the natural world. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन ब्रिंग हुए या हो सकते हैं जो कि इसमें है कि भाई आपको कैसे पता कि ये सब हुआ है और ये सच है या झूठ है, ये सिर्फ कहानी है। मतलब इस तरह की मैं एक अपने से आपको भी बता रहा हूँ। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने बड़ा काम किया। अब आपको ये साइंटिस्ट के मेथड बताएगा। ठीक है, व्हाट आर साइंटिफिक मेथड्स? व्हेन साइंटिस्ट ऑब्जर्व द नेचुरल वर्ल्ड, they often think of a question or problem, but scientists don't just guess answer. Instead, they follow a series of steps called scientific methods. ठीक है, वो एकदम जवाब नहीं देते, scientific methods से उस चीज़ को प्रूव करके फिर जवाब देते हैं। Scientific methods are a series of steps that scientists use to answer questions and solve problems. The most basic steps are shown in figure 2. तो ये कह रहा है फिगर 2 में जो है ना जो एक मोस्ट बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको शो हो रहे हैं वो देखें। ये है आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, ये इससे रिलेट करते हैं। मेक ऑब्जर्वेशन, आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अ हाइपोथेसिस, एनालाइज द रिजल्ट, टेस्ट द हाइपोथेसिस। ठीक है, और डू दे सपोर्ट योर हाइपोथेसिस, यस और नो। कम्युनिकेट रिज़ल्ट, इसके जो वो है फिर रिज़ल्ट को ये कम्युनिकेट करते हैं। ऑल दो यहाँ से अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर। ऑल दो साइंटिस्ट मेथड्स हैव बीन सेवरल स्टेप्स, देयर इज़ ना अ सेट प्रोसीजर। साइंटिस्ट में यूज़ ऑल ऑफ steps or just some of these steps. They may even repeat some of these steps or do them in a different order. The goal of scientist methods is the come up
with reliable answer and solution. Scientists use scientific methods to gain insight into a problem they investigate. ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा. अब इसको हम देखते हैं. आस्क क्वेश्चन हेल्प्स फोकस. अब ये जो आपकी वो है ना, इसने बताई थी, इसके बारे में आपको ये थोड़ा सा वो करेगा. जैसे आप ये फिगर आपने देखी थी ना, इसके बारे में इसको आपको ना एक एक करके इसको बयान करके ये बताएगा कि यार साइंटिस्ट का असल में मेथड क्या होता है. तो हमें इस जो चैप्टर है इसमें यही सीखने को मिलेगा कि हम साइंटिस्ट का मेथड क्या होता है. इसने बोला आस्क ए क्वेश्चन हेल्प्स फोकस to propose of an investigation. For example, David D. Gilliat, a scientist who studied fossils, examined some bones found by hackers in New Mexico in 1979. He could tell they were bones of a dinosaur, but he didn't know what kind of dinosaur. Gilliat may have asked, what kind of dinosaur did these bones come from? Gilliat knew that in order to answer this question he would have to use scientific methods. ठीक है. अब जो गिलेट थे इनको क्या था कि इन्होंने एक जो ना फॉसल्स दरियाफ़्त की. ठीक है, फॉसल्स इनको मिली. जब वो मिल गई तो फिर इन्होंने कहा कि ये डायनासोर की हैं. तो इनसे फिर पूछा गया कि अच्छा ये डायनासोर की हैं, तो फिर आपको कैसे पता चला. ठीक है, नंबर 1. लेकिन जिस उसका है ना जो क्वेश्चन यहाँ बताया गया वो ये है कि किस टाइप के डायनासोर तो आपने कह दिया, लेकिन किस टाइप के. तो फिर उन्होंने इसका जवाब देने के लिए साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया. फ्रॉम हाइपोथेसिस. ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होते हैं? व्हेन साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट अ क्वेश्चन दे फॉर्म अ हाइपोथेसिस. ठीक है. Hypothesis is a possible explanation or answer to a question that can be tested based on his observation and on what he already knew. ठीक है, ऑब्जर्वेशन उसके जो उसको पहले से पता होता है. Get said that the bones shown in figure 3 come from a kind of dinosaur not yet known to scientists. The hypothesis was Gare's best testable explanation for what kind of dinosaur the bones come from. ठीक है, वो कह रहे हैं ये थे जो हमें बोन्स मिली, लेकिन किस टाइप का डायनासोर है ये भी कंफर्म नहीं है. ये इनका हाइपोथेसिस था. फिर टेस्ट द हाइपोथेसिस. वंस अ हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड इट मस्ट बी टेस्टेड. साइंटिस्ट टेस्ट हाइपोथेसिस बाय गैदरिंग डेटा. द डेटा कैन हेल्प साइंटिस्ट टेल if the hypotheses are valid or not. To test his hypothesis, Garrett studied the dinosaur bones. ठीक है, उनकी बोन के बारे में पढ़ा उसने. फिर इसमें ये एक एक करके से बता दिया. ठीक है, यहाँ पे फिर एनालाइज किया और रिज़ल्ट की बारी आती है आपकी. एनालाइज द रिज़ल्ट. वन साइंटिस्ट फिनिश देयर टेस्ट दे मस्ट एनालाइज द रिज़ल्ट. साइंटिस्ट ऑफन मेक टेबल्स एंड ग्राफ्स to organize and summarize their data. When Gillette analyzed his result, he found that the bones of the mysterious dinosaur did not match the bones of any known dinosaur. The bones were either too large or too different in shape. उन्होंने जब ये किया तो जैसे एनालाइज किया तो उनको पता चला कि यार ये जो हमें अभी वो मिले हैं ना, इसके फॉसिल्स मिले हैं, इनकी हड्डियाँ मिली हैं, ये हड्डियाँ रिलेट नहीं कर रही उन डायनासोर से जो पहले मौजूद थे. यानी कि कोई एक ही अलग ही नस्ल है और ये बहुत बड़ी है. ड्रॉ कंक्लूजन. आफ्टर carefully analyze the result of their test, scientists must conclude whether the result supported the hypothesis. Hypotheses are valuable even if they turn out not be true. If a hypothesis is not supported by the test, scientists may repeat the investigation to check off for error, or they must ask new questions and from new hypotheses. Based on all his studies, Gillett फिर ये इस तरह आप मज़ीद देख सकते हैं. इसको अब ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ. कम्युनिकेट रिज़ल्ट इसका जो है ना, फिर वो करके फिर इसको केस क्लोज कर देते हैं लोग. ठीक है. आफ्टर फिनिशिंग एन इन्वेस्टिगेशन, साइंटिस्ट कम्युनिकेट their results. In this way, scientists share with others that they have learned.
Science depends on the sharing of information. Scientists share information by writing reports for scientific journals and giving lecture on their results. इवन अब केस क्लोज्ड की बात करते हैं, ठीक है. इवन आफ्टर रिजल्ट आर रिव्यूड एंड एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट कम्युनिटी ऑफ पब्लिकेशन, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टॉपिक may not be finished. New evidence may become available. The scientists may change the hypothesis based on new evidence. In the all other cases, the scientists may have no more questions that arise from the original evidence. For example, with the discovery of the Samosaurus, Gillett may have wondered what the Samosaurus ate, what environment did it live in, how did it become extinct, as shown in फिगर 6. ये थे जो कि आप इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि यार ये कब ख़त्म हुए, कैसे ख़त्म हुए, ये क्या खाते थे, काफ़ी सवाल थे. ठीक है, तो ये आपने एक देखा इसका हमने आपको बताया साइंटिस्ट मेथड्स, अर्थ साइंस किस तरह पढ़ते हैं. तो ये बड़े एक मैं कहता हूँ आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. आप ज़रूर इसको ना फॉलो कीजिएगा मेरी वीडियोस को, ताकि आप इनको समझ सकें. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएंगे. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें. नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें. मिलते हैं नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.